जैसे हमने स्टार्ट किया राइट कि अगर जब आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत कम सपोर्ट होगा इंडस्ट्री में। आप पैसे कम डालना चाहेंगे 20-25 लाख वोडेवर से आपका सीड फंड होगा। आप चाहेंगे कि आपको तो आप कपड़े कम बना पाएंगे, आपको विथ ऑप्शन ज़्यादा देने कस्टमर्स को। तो आपकी MOQ कहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, किसी फैक्ट्री के पास 20-25 की होगी, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो उसकी वजह से आपका मतलब टू गेट योर क्लोथ्स मेड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर देन एंड व्हाट अ Zara or a big brand or any other mid-sized brand is also selling. What are some prerequisites अगर किसी को फैशन में कुछ शुरू करना है? अपने कहानी के साथ ही बताइए। एंड इसमें होता कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर कहाँ कहाँ लिस्ट कराना पड़ता है? सो फैशन बिजनेस का पहले तो प्री रिक्विजिट है ये कि आपको फैशन को एंजॉय करना है। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई मार्जिन बिजनेस है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। तो जैसे मैं किताब बेचूंगा, जैसे मैं मोबाइल बेचूंगा, वैसे ही मैं फैशन बेच दूंगा। वो एक्चुअली सही नहीं है बिकॉज फैशन इज़ एन आर्टिस्टिक आउटकम, इट्स अ क्रिएटिव आउटपुट आफ्टर ऑल। पीपल आर बाइंग even more so on an emotional whim than just the merit of the product. Because it's a small size scale of the business, so the number of customers you need to pacify or have accountability to is lower. Like think of a Zomato where every day 18 million orders or 18 lakh orders are coming in daily. उसमें 5% 2% का डिले मतलब कि बहुत लोग हैं राइट। हमारे में 2% का डिले मतलब एक ऑर्डर को इधर उधर हो गया है भाई, फोन करके संभाल सकते हो राइट। सो बेसिकली दैट द स्केल इन इटसेल्फ इज द काइंड ऑफ पाइल डिसाइडर की कितना बड़ा मैस है नहीं है। बहुत सारे लोग कॉलेज से शुरू करते हैं तो अपना दोस्ती उठा लेते हैं राइट कि तेरे साथ करते हैं बिजनेस। बहुत सारे लोग जैसे आपने अपने जर्नी में एक दूसरे को डिस्कवर किया एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग योर ओन बिजनेस। तो कौन सी डायनामिक्स दिमाग में रखना ज़रूरी है व्हाइल चूजिंग अ को-फाउंडर? I think first is that do your value systems align, right? Like are you going to be building the same thing or at some point in time you start chasing different things after the grunt work is over? I think that is the first thing. इस मेंटालिटी से हम फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे निकाले कि कोई बात नहीं, अपब्रिंगिंग अगर हुई है जहाँ पे जॉब ही सब कुछ है तब भी तुम डे 1 से रिस्क ले सकते हो। ये एक्सटर्नली बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू बी 40, मिड लाइफ क्राइसिस इज़ अ रियल थिंग ये हो सकता है कि मेरा मिड लाइफ क्राइसिस हो। आई थिंक और व्हेन यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स बोलते रहेंगे कि आपका बॉयफ्रेंड बकवास है, आप नहीं छोड़ते जब तक आपको अपने आप रियलाइज़ नहीं होता है राइट। सो आई डोंट थिंक दैट एनी अमाउंट ऑफ लाइक नैरेटिव ऑफ प्रीचिंग एक एंटरप्रेन्योर को आई थिंक अपने मन से आता है दैट रिस्किंग एवरीथिंग it seems like a better decision than to be safe. Hey everyone, कैसे आप? एक और एपिसोड बढ़ता इंडिया देखो का। आज हमारे साथ ऐसे दो फाउंडर्स हैं जिन्होंने 15 साल कॉर्पोरेट में काम किया बिफोर फॉलोइंग देयर ओन ड्रीम्स। एंड वो ड्रीम भी क्या, बनाना एक ऐसा कंपनी which would actually stand for women in metro cities and look at their needs of fashion and therefore help them in establishing their place in the corporate world. Today we have Pragya and Priyush with us for Unrush, and as the name suggests, their personalities also take us to a journey of how they are building Unrush just 1 year into the space now, but actually building waves around it. Take the episode. Pragya and Piyush, welcome to बढ़ता इंडिया देखो. It's an absolute privilege to have both of you together. जब भी co-founders आते हैं बढ़ता इंडिया देखो में मुझे एक अलग खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि डायनामिक्स जो है उसी में एपिसोड निकल जाएगा. Let's hope that happens. Let's hope not. We are not very well behaved. हाँ मतलब both ways. It kind of goes both ways. Yeah. But you also whatever little chat थोड़ा बहुत हमने जो इससे पहले बात करी है, you both are also poles apart, very different personalities, and I am given to believe हमारे यहाँ I think 4 से 5 co-founders आ चुके हैं, and otherwise also the people I know, opposite personalities normally work really well for business and organizational growth के लिए ये बहुत important है. तो as starters आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि आप दोनों का personality अलग है? First of all, do you believe कि आपका personality अलग है? तो वो भी आप बोल सकते हैं, और अगर है तो does it help in building the business? I think on the surface it does seem like we have different personalities,
but more or less our moral compass points in the same direction. So- we're actually when it comes to business principles or philosophy or just how we want to be seen by the world, they're actually very simple. हमारा ऊपर का personality different है, but like how to treat people, how to treat our employees, how to deal with money, it's actually very similar. And So and to your second part of your question, that फ़ायदा होता है कि नहीं? Yes, because ऊपर से हम different है तो हमारे skill sets बहुत different है. Like I am more customer facing, design, marketing, I understand all of that better, and then he's really the backbone of the business where, you know, like our skills are very, very different. yeah, but I think more to the nature also, in every conversation you have like a devil's advocate already present in the conversation. Like whatever the two sides of any conversation can be, we obviously play that out, and it's not something that we are consciously doing, it just happens so. No, he's consciously does that. Sometimes he will just say the opposite thing just, and I'm like, Piyush, really not the time. No, so sometimes, like, if you're just arguing for the heck of it, and there are times, okay, you just get to know what is the actual logic behind whatever the सामने वाला person is saying. और आपने फालतू क्वेश्चन पूछा है, ऐसा आपको भी पता है, सामने वाले को भी पता है, but sometimes it works. नहीं, एक बात बताइए, एंड द मेल फीमेल डायनामिक्स कभी कभी वो भी काम कर जाता है. ऑल्सो आई डोंट नो, इज देयर अ डायनामिक्स ऑफ एक जना इज सपोज टू बी अ लिटिल मोर एक्सट्रोवर्टिश और एक जना थोड़ा कम बोलता है, एट्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें आती है, राइट? एंड एज अ को फाउंडर्स एंड मे बी वी आर स्टार्टिंग विद दैट थीम, तो उसमें आपको लगता है जब एडवाइस करेंगे आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को, बहुत सारे लोग कॉलेज से शुरू करते हैं तो अपना दोस्ती उठा लेते हैं, राइट, कि तेरे साथ करते हैं बिजनेस. बहुत सारे लोग जैसे आपने अपने जर्नी में एक दूसरे को डिस्कवर किया एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग योर ओन बिजनेस टुगेदर. तो कौन सी डायनामिक्स दिमाग में रखना ज़रूरी है व्हाइल चूजिंग अ को फाउंडर? I think first is that do your value systems align, right? Like, are you going to be building the same thing, or at some point in time, you know, you start chasing different things after the grunt work is over? I think that is the first thing. But apart from that, diversity should be, I think, skills. You pointed out rightly, one is usually an extrovert in certain circumstances, one is usually because the skills are different, right? Like when he's managing logistics or something, I will not even enter that room. मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या मतलब बोल रहा है. And then when it comes to marketing or something and managing those stakeholders, right? So I'm extroverted in those circumstances. So I think that is very important to build on. And then yes, दोस्ती यारी, I think आप दोस्ती उसी से करते हैं जिसके बारे आपको कुछ एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा मानना है. And you want that part. You want to learn from that person, right? All my friends are people I want to learn something from, and so is he. We were friends before, so he's very grounded. He's very he's very annoying, but he's very, very grounded. Extremely hardworking, extremely diligent. Very surprisingly, like, you know, rises through the occasion. Like, you know, you will not even expect him to have done certain things. Those are things I wish I had. I can be a little bit of a talker. And late, like, if I may sometimes seem like I do the most of the work, but it's not true, you know. So I really appreciate that about him, and that's why we are friends. I don't know why he agreed. थोड़ा अलग तरीके से आपको पूछता हूँ, what do you not like about her? अभी तक मतलब I have not found like a red flag sort of thing. मतलब there will be like small things about every person that might irritate you, but then it's also mostly you, because you have not been in such an environment or such a group of friends, and we have very different set of friends. Like even in college, like I think our circles were mostly different, even though we were आप सेम कॉलेज से हो? Classmates, we were batchmates, Batchmates. study From? group mates. ISB. ISB ISB Hyderabad. Hyderabad. But yeah, so I think it's just different, and whatever it is that's irritating you, I think you can also reflect upon yourself. Ki, why is this something that I'm bothered by? So I that think also that gives also, perspective. because it is a very old friendship, I think we had also
between the two of us, we're not insecure with each other. So there is no like, isko ye feedback मैं कैसे दूँ, right? Like recently, what has started happening is that we have been reaching out to mentors and investors, etc. And none of us have done it before. And in those rooms, your childhood insecurities or what things that all those things are on full display, So right? So true. you have So to true. give each other feedback. That Piyush, I think that this is what your belief system is. This is what you need to change, and this is how you need to evolve. And then he will say that, listen, you were just going on rambling in a meeting, and I think that this is so. I think that level of giving feedback without we need to have a conversation, like. You can give candid feedback as and when it comes to you. You don't have to wait for an occasion. Create an occasion, a festival Yeah. that I'll Yeah. give you feedback Yeah. on. It's never like it's now getting serious. We need to talk. नहीं, जब जो मन में आया बोल दो. ट्रस्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आई थिंक म्यूचुअल ट्रस्ट दैट वी बोथ want Yeah, I have think the same goal. When your friend's trust is already in place, trust in the person is already there, trust in his abilities, that comes only when you have worked together, or like since we were in the same study group and all, तो we know कि कुछ skill set है जो इनके अच्छे हैं, कुछ मेरा अच्छा है, तो अपने ऊपर तो ट्रस्ट है, सामने वाले का भी आपको थोड़ा बहुत skill set पता है, तो you know that you can make this work. And it has to take something drastic to basically make it sour or go in a wrong direction. Both of us are exactly the reason why we are friends, and why we clicked and the friendship has survived more than a decade of just having spent 1 year in ISB, is that हमारा assignment जो भी होता था, if we have taken the responsibility of the group, if he has or I have, वो ज़रूर submit हो जाएगा, खुद का भला भूल जाए, right? But we are like, we will never make anybody else suffer because of us. I think that's how both of us are similar. So we have that trust. And then when we take business decisions regarding our employees or our customers, it comes from a great place of empathy and responsibility. We never have to argue about those things. फैंटास्टिक. तो ऑडियंस को थोड़ा अपना कहानी शुरुआत से अनरश तक एक बार बताइए, मे बी ब्रीफली, कि ताकि उनको समझ आ जाए कि प्रज्ञा पीयूष कौन है और वो आज के डेट में स्टार्टअप ही क्यों करना चाहते हैं. बहुत बार हमारे ऑडियंस से सवाल आता है कि इनको ऐसा क्या सूझा कि इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया. मोस्टली इज कमिंग फ्रॉम देयर ओन लाइफ सिचुएशन कि हमने नहीं करा है, हम नहीं कर पाए. तो अपनी कहानी वहाँ तक अनरश तक एक बार ले आइए. मे बी Pragya, you start first. प्रज्ञा, you want to start? So it's जब से मैं छोटी थी, मुझे फैशन बहुत पसंद था. मुझे फैशन ही करना था. मैंने 6th ग्रेड में मम्मी को बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट जाऊंगी. मम्मी ने बोला था हाँ ओके, तुम जा सके तो जाओ, ठीक है. बट इट हैपेंड. कहाँ पे, कौन से शहर की बात कर रहे हैं? छोटे शहर में, रांची में. हम दोनों रांची में पढ़े. उस समय हमारी ऑब्वियसली हम जानते नहीं थे एक दूसरे को. सो आई वेंट टू निफ्ट. देन जब मैंने ग्रेजुएट किया निफ्ट से, तो बिल्कुल मतलब 2007 में बिल्कुल माहौल ऐसा नहीं था कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आके आप अपना एक फ़ैशन ब्रांड बना सकते हैं. आपको पैसे होने चाहिए थे. अगर आप डिज़ाइनर हैं तो मतलब आप लैक्मे फैशन वीक, विल्स फैशन वीक में डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका पैसा लगता है. और आपके एस्थेटिक्स भी ऐसे होते हैं कि आप पैसों में ही बड़े हुए हैं, और जो हमारे साथ नहीं है. तो आज भी हमारा ब्रांड लग्जरी ब्रांड इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए दो दुनिया हम जानते हैं, हम उसी को केटर कर सकते हैं, राइट, विच इज़ वाई इट इज़ मास प्रीमियम ब्रांड. फिर 6 साल मैंने कहा बेस्ट बेट डिज़ाइनर नहीं बन सकते, तो ग्लिटर की दुनिया में फ़ैशन जर्नलिस्ट होता है. तो मैं फिर फ़ैशन जर्नलिस्ट बन गई. 6 साल मैंने फ़ैशन जर्नलिज्म किया. क्या बात है. कहाँ पे? मारी क्लेयर मैगजीन आउटलुक ग्रुप का होता था, उसकी मैं ब्यूटी एडिटर थी 6 साल के लिए. 3 साल 4 साल के लिए थी. या उसके पहले काफ़ी मैगजीन्स पब्लिकेशंस में राइटर थी. उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ही बोरिंग हो चुका है कि हर 6 महीने हर महीने एक सेलिब्रिटी को शूट करो, उसको कवर डालो, उसकी कहानी बताओ, और वही कहानी बताओ जो सेलिब्रिटी बोलना चाहता है अपने बारे में. काफ़ी बोरिंग है ये. तो फिर मैंने देन आई टुक अ ब्रेक. आई वेंट टू ISB. दैट्स वेयर वी मेट. एंड जब ISB से आई ग्रेजुएटेड. कौन सा ईयर है? 2013-14. तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो बड़ा टेंशन था मुझे कि भाई मैं तो फैशन जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसल्टिंग के ही रोल्स आ रहे हैं और किसी को मतलब है नहीं मुझसे, ठीक है. आई विल नॉट गेट प्लेस. बट आई गॉट लकी. Myntra was coming up at that time, so I got placed at Myntra. And then next 10 years I spent largely in fashion e-commerce with ABG, Myntra, Arvind.
कंटेंट सोशल कॉमर्स प्ले मैंने बिल्ड किया मिंत्रा का। 6 साल मैंने मिंत्रा पे टोटल लगाए इन 10 सालों में। एंड उनका हाउस ऑफ ब्रांड्स का बिजनेस है, जिसमें रोडस्टर, HRX, हाउस ऑफ पटौदी, अनु की सारे 20 करीब ब्रांड्स हैं, उनका मैंने मार्केटिंग लीड किया था। ये सब करते करते 17 साल हो गए काम करते हुए। और फिर मेरे को लगा कि अरे मुझे तो डिज़ाइनर बनना था। और एंड आफ्टर हैविंग वर्कड, see when you come from a middle class family, this is what my journey was. The first thing you need to solve for is your financial comfort. 100%. And it takes time to build that, and then it also takes time to realize that I have this much money is enough for me to secure my future. I will not fall lower than this if I take a bet on myself. और एंड वो उससे भी ज़्यादा बर्डन होता है जब आप आते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, जिसमें एक अच्छा जॉब ही मिल जाना बहुत बड़ी बात है। आपको सिखाया जाता है कि बस इसको मिल गया तो छोड़ना नहीं है, राइट। तो जब लेकिन ये करने के बाद डिससैटिस्फैक्शन आने लगती है आपको अपने काम से कि अच्छा आप कर रहे हैं, पैसे अच्छे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मतलब कपड़े ही तो बेच रहे हैं, और कपड़े बेच लो और कपड़े बेच लो, राइट। लाइक तो अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है तो क्यों ना मैं अपने कपड़े बेचूँ, राइट। और एक ये था, और दूसरा है कि दुनिया का जो फोकस था इंडिया का भी, वो काफ़ी फास्ट फैशन की तरफ बढ़ चुका है। और उसमें बहुत बड़ा बिजनेस भी है, क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास राइज हो रहा है और वहीं स्पेंडिंग कैपेसिटी है। लेकिन मेरा वो पर्सनल एस्थेटिक नहीं है। मैं हमेशा से ही मतलब मेरे इवन दो आई एम अ डिज़ाइनर, मेरे वार्डरोब का साइज़ मतलब बहुत ही छोटा है, तो मैं मिनिमलिस्ट हूँ बाय नेचर। तो और मिनिमलिस्ट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास क्वालिटी कपड़े होते हैं, ठीक है, कम होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, आप 100 बार पहन सकते हैं उसको। सो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। सो देन आई थॉट फाइनेंशियल कंफर्ट इज़ बिल्ड, दिस इज़ गेटिंग बोरिंग, मार्केट रेडी है, इतने सारे D2C ब्रांड्स आ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं D2C ब्रांड्स एंड दे आर एबल टू डू वेल। तो मेरे पास तो 17 साल का एक्सपीरियंस है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रांड्स को होती है मार्केटिंग में, तो वो तो मुझे मेरा क्रैक्ट है ना। तो और प्रोडक्ट तो हम कर लेंगे, अंडरग्रेड में डिज़ाइन किया है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया। मैंने फिर भी श्योर नहीं थी, मुझे सबैटिकल लिया मैंने। मैं अफ्रीका गई थी 6 महीने मिंत्रा के बाद, मिंत्रा में रहते ही सबैटिकल लिया, वहाँ पे जाके सोचने के लिए कि भाई मुझे करना क्या है। ये अफ्रीका जाके सोचा आपने? हाँ, कि मतलब बिकॉज आई न्यू दैट इफ आई एम गोइंग टू टेक द एंटरप्रेन्योरियल जंप, I am going to lose my financial comfort for some time because it is going to be bootstrapped, right? I need to learn to be happy with less and focus on what's available instead of measuring myself on happiness and success as my peers do, because मेरे peers अपना दुनिया नहीं छोड़ेंगे। So I need to learn True. इसमें मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा प्रज्ञा। वन तो इज़ आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत बार हम कहते हैं कि आपने स्टार्टअप क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया। I feel the biggest startup that we first have to solve is our own lives. Yeah. And उसमें आप ब्रेक इवन पे पहुंचो, प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचो, उस पे आप अपने प्रोडक्ट सही करो, विच इज़ योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, योर डिग्रीज, योर नॉलेज, योर स्किल्स, एंड उसके बाद मे बी इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू सॉल्व फॉर अ स्टार्टअप विच इज़ बियॉन्ड यू or which is other than you, and so I 100% agree. Absolutely. Second is I'm extremely jealous that you went to Africa to think. I ran away from home for one evening and dedicated that one evening entirely 31st July 2022 कि आज ही एक ही दिन है जब मैं सोच लूंगा कि हाँ मेरा ट्रांजिशन हो रहा है, बस उतना ही था। बट तो आपको मुझसे कम डर लग रहा होगा। हाँ, मैंने फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव यस, बट ये भी हो सकता है ना कि सोचा ही नहीं इनफ, तो अभी पता ही नहीं कितना डर लग सकता है। सो या, बट व्हेन डिड अनरश स्टार्ट देयरफॉर इसके बाद? सो देयरफॉर 2023 I went to Africa for 3-4 months, came back, left my job at Myntra and then started working, and 24 mid Unrush launched. So I took 6 months to launch after Africa, to launch the brand. तो before I come to you पीयूष, इसमें मुझे ना एक बहुत सिमिलर पैटर्न लग रहा है। मतलब आई ऑल्सो इवेंचुअली स्टार्टेड माई स्टार्टअप एंड आई हैव काइंड ऑफ ग्रोन ओल्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद 10 साल पहले शुरू हो सकता था, पार्ट ऑफ मी को लगता है, बिकॉज दिस जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी पनिशिंग, बट एटलीस्ट वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एड्रेनलिन रश, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एटसेट्रा। तो ये इस मेंटालिटी से हम फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे निकाले कि कोई बात नहीं, अपब्रिंगिंग अगर हुई है जहाँ पे जॉब ही सब कुछ है,
तब भी तुम डे 1 से रिस्क ले सकते हो। आई एग्री, बट आई थिंक यू नो जितना आप किसी को ये एक्सटर्नली बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू बी 40, मिड लाइफ क्राइसिस इज़ अ रियल थिंग, यू नो। ये हो सकता है कि मेरा मिड लाइफ क्राइसिस हो, आई थिंक। और व्हेन यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स बोलते रहेंगे कि आपका बॉयफ्रेंड बकवास है, आप नहीं छोड़ते जब तक आपको अपने आप रियलाइज़ नहीं होता है, राइट। सो आई डोंट थिंक दैट एनी अमाउंट ऑफ लाइक नैरेटिव और प्रीचिंग एक एंटरप्रेन्योर को आई थिंक अपने मन से आता है दैट risking everything, it seems like a better decision than to be safe, right? And I think that for some people it can come at 21, some people it can take 40 years, right? That depends, right? I'm just giving you a pushback against what you said, right? I'm also very wary of people who think of the entrepreneurial journey as a little bit trivial. अभी इंस्टाग्राम पे सबको ब्रांड बनाने का मन है, एंड आई मेंटर अ लॉट ऑफ लाइक पीपल एंड आई हेल्प देम आउट, एंड आई सी दैट दे हैव जस्ट स्टार्टेड, they have not put in two things. One is the mental work that you have to, because you know you are not going to be successful on day one, right? You're going to lose your identity, shed it, then rebuild yourself, right? It takes a huge amount of mental work and resilience, जो किसी को जल्दी आ सकता है, किसी को बाद आ सकता है. And second is the wherewithal. There are more brands that fail than succeed. I don't know what's going to happen to ours, but I think that we are better poised because we understand business. We spend those many years building businesses for other people, right? हमारे में जैसे marketing में कहते हैं reason to believe है success का. तो ये कि कूद नहीं जाना है, मुझे लगता है. अगर आप कूद सकते हैं तो दो लोग कूद सकते हैं. जैसे एथलीट्स का होता है, दो तरह के, it's a fact. Two kinds of athletes are very good. Ones who are very rich, they have nothing to lose. Or ones who are very poor, they have nothing to lose. What is your point in time when you have nothing to lose, right? And that can be different for different people. State of mind. Yeah. Maybe also. Yeah. But very, very well put. Piyush, your story? So, I actually also grew up in Ranchi and I went to a boarding school. वो सब खत्म करके फिर बोर्डिंग स्कूल में तो शैतान बच्चों को भेजते हैं. My parents actually took this decision based on the fact that my entire family is in the family business. It's like a trading chota business, middle class people. They did not want me to join a business or the family business or have a business of my own, whatever. They wanted me to do a naukri. उनको लग रहा होगा oops हो गया. हाँ, and like my father said as much. Okay, he basically said कि I don't feel you should be doing a business, anything, and basically. I believed in whatever everyone was telling me. I did engineering because every one of my friends was doing engineering. Got a job in a core company, Hero MotoCorp. 4 साल काम किया वहाँ. Learned about manufacturing, everything that there was to it. I was in the engine section, not like the entire motorcycle, but gas और transmission के बारे में enough पता चल गया था. I was bored in 2-3 years and I asked my boss कि hey, can I switch to a different section or whatever, and he said the company has spent 3 years, you know, making you knowledgeable enough so that you can now do better for the company, and you now want to switch and get another thing, and that was their approach to it. So I just took a break and went to do an MBA because I did not know what else to do there. First I heard of consulting was an MBA, and then I came to know that अच्छा 10th 12th सब में अच्छा मार्क्स लाओगे ना तब जा सकते हो. तो I was like ठीक है, यहाँ तो अब नहीं जा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं वो देखते हैं. तो every other job just felt like कि at the end of the day they'll come interview you and whatever skills you possess उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होना या नहीं होने वाला है. यहाँ आप कुछ भी करने वाले हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर. That's what I felt. Okay, तो did that, went to e-commerce, Amazon, Flipkart, Zomato. 10 साल काम किया. ये ISB के बाद के 10 हाँ साल. हाँ ISB के बाद. Amazon, Flipkart, Zomato. Yeah, and कुछ छोड़ा नहीं मतलब स्टार्टअप. नहीं, पेटीएम नहीं बोला इसने. पेटीएम बोला, लेकिन गया था पेटीएम थोड़े टाइम के लिए. हाँ हाँ. पेटीएम was like a short stint, 8-9 महीने. Okay. उसको काउंट नहीं कर Also रहा है. did like a small startup, Fab Furnish था. 3 साल वहाँ भी था. ज़्यादा छोटा नहीं है बट हाँ but. No, basically it was small when I joined it, and हाँ. then it went to a completely different place. After doing all of this, I realized कि कितना भी काम कर लो, end of the day आपको ना हमेशा ये लगेगा in a job that something is not fulfilling. At least for me it wasn't. And
you have zero work-life balance. You know, it is frowned upon if you want to leave the office on time. Very few bosses actually have the sense to say, or the kind of expectations to hold on a timeline project that ways. My experience again. So I just felt कि इतना pressure मैं ले रहा हूँ life में. Also had kids around the same time. Twins थे. Needed space for myself. पेटीएम छोड़ दिया. दो महीने का I had like a notice period. उसमें ज़्यादा उन्होंने काम नहीं कराया thankfully. So I could stay back at home and be with the kids. It wasn't enough. Went to work for another company because we obviously needed the money. And then just felt like whatever I'm doing is not actually helping me go to a place where someday I will have enough time. ऐसा फ्यूचर में ही नहीं दिख रहा था. तो आई वॉज जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग कि क्या करना है लाइफ में, एंड आउट ऑफ ब्लू शी कॉल्ड मी कि आई नीड हेल्प विद समथिंग ऑपरेशनल एंड दिस इज अ ब्रांड दैट आई हैव स्टार्टेड. आई वाजंट अवेयर उसके पहले. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, ये तो ऑपरेशनल इशू है, ये XYZ ऐसा कर सकते हैं. एंड वो बात हो गई. फिर आई थिंक सेम डे और नेक्स्ट डे फिर से वापस होना है कि अच्छा व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज. आई वाज लाइक कि क्योंकि जो सॉल्यूशन बताया मैंने कहा कि ये तो कर नहीं सकती मैं. मैं खुद नहीं कर पाऊँ. हाँ, so basically coached. no, for, like मतलब it wasn't like a big problem for me. तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसे कर लेना, and I really thought that she'll be able to do it. तो then she said कि तुम क्या कर रहे हो, and I was like I am not really doing anything right now. तो she's like why don't you join me? I was like ठीक है. You had any other employees at that time? No, no. Yeah, my accountant. That's also something I can't do. So yeah. Yeah, actually, accounts is something that both of us are poor at. I had, but like I had before I started the company, I asked so many people that will you do it with me, and that ties back to the question you were asking me earlier, right? Like, and I knew that this is not a one-man job, But all my friends said no, they fashion is not their thing. They don't want to do it. You have to want something bad enough when it comes, because you are going to get enough ठोकर्स in your way. Yeah. That मैंने सोचा तो अकेले start कर ले, देखा जाएगा. So I actually started it alone. फिर 3 months में of course I started crying, so I called it. Yeah. Okay, so mid 2024 and 3 months later you joined. September I joined. September. Yeah. So basically, a day later I called her कि ठीक है, I can join. I just had one question. Like she had gone to Africa in the year past. I just said कि अगला 1 साल 1.5 साल में you don't want to take like a 6-month break, right? And she was like नहीं ये सब नहीं करना है. Yeah, very bizarrely he had this question. Like he wanted to make sure, I think when as your viewers are seeing the thing, what questions you should ask your co-founder is कि उसकी लाइफ स्टेज क्या है, और वो बोलने जगह तो छोड़ तो नहीं देगा, बिकॉज इसने मतलब आई हैड टू हैव अ 1 hour कॉन्वर्सेशन टू टेल हिम कि मैं नहीं छोड़ूंगा. हाँ, मतलब मैंने स्टार्ट ही किया है ना, मतलब मैं क्यों छोड़ूंगी. बट ही वाज लाइक नो, व्हाट इफ यू गेट बोर्ड, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, यू कैन डू एनीथिंग, whatever. So I think we are both at the stage of our careers where expertise है एक सेक्टर में, उसको बड़ा बनाना. किसी भी मतलब जैसे operations of anything if you give me right now, I think I'll be able to work my way around. Something that I have been into. मिलते कहाँ हैं वैसे? Operations में बहुत अच्छे होते हैं और एकदम. ये हमारे जैसे लोग हर गली में हैं. हर गली में हैं. अलग से बात करते हैं. ये गली ये operations में इतना अच्छा है कि इसने मुझे ISB में पढ़ाया और मुझे A आ गया. एक ही सब्जेक्ट में मुझे A आया है. But I think so it could be my approach to things, but I really feel that there are a lot of very very talented people in the country in operations. I've seen a lot of them. It's the heart of a business, ना मतलब वो it is the अच्छे heart से of the चलना business, and जरूरी है. there are very proud people in operations. I get who it. That's what don't I'm want to asking. be at the front end of things, who don't want to be fronting conversations. They'll be like कि मुझे गुमनामी में छोड़ दो, मुझे शांति से काम करने दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, परेशान मत करो. Process oriented तरीके से काम हो जाएगा. Right. Wonderful. And then उसमें जुगाड़ू लोग भी आपको मिल जाएंगे कि प्रोसेस से तो 4 दिन लगता है, आपको 2 दिन में मैं करके देता हूँ कैसे भी. हाँ. Best is when you have a mix of both. Someone who understands the urgency कि ये अभी करके देना, I can't go A, B, C and D, and someone who understands कि now the scale is so big that you don't want to be doing जुगाड़. Got it, समझ गया. हाँ. ये बताइए फैशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा घुसते हैं. What is
व्हाट आर सम प्री रिक्विजिट्स अगर किसी को फैशन में कुछ शुरू करना है, अपने कहानी के साथ ही बताइए। एंड इसमें होता कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर कहाँ लिस्ट कराना पड़ता है, हाउ द बिजनेस मॉडल कैसे दिखता है, मतलब खर्चे क्या है, रेवेन्यू तो मोर और लेस ऑब्वियस है बट खर्चे क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए whoever। सो फैशन बिजनेस का पहले तो प्री रिक्विजिट है ये कि आपको फैशन को एंजॉय करना है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई मार्जिन बिजनेस है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, तो जैसे मैं किताब बेचूंगा, जैसे मैं मोबाइल बेचूंगा, वैसे ही मैं फैशन बेच दूंगा। वो एक्चुअली सही नहीं है, बिकॉज फैशन इज एन आर्टिस्टिक आउटकम, इट्स अ क्रिएटिव आउटपुट आफ्टर ऑल। पीपल आर बाइंग more, even more so on an emotional whim than just the merit of the product. So if you yourself don't feel the merit of the product at an emotional level, you can't communicate it to your customers, and hence you cannot sell the story, right? It's not like a mobile phone कि इसमें इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, ये है, वो है, वो। After all, ये टी-शर्ट है, right? Like, so I think that one thing, you love for the sector and appreciation is very important. उसके बाद आई मीन रियली ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द बिजनेस, द फर्स्ट प्रोसेस इज आप डिज़ाइन से शुरू होता है, आप खुद डिज़ाइन करें, आपके पास डिज़ाइनर्स हैं, फिर उसका सैम्पलिंग होता है, आप उसके पीपल होते हैं, मास्टर जी होते हैं, who's a slightly relatively highly paid resource because that's the math behind the creativity। आपने कुछ ड्रॉ वर्क कर दिया है, उसको इंटरप्रेट करना, 3D में कन्वर्ट करना, मेक इट वर्क, that's फैशन R&D, इट टेक्स अ बंच ऑफ टाइम एंड आइटरेशंस। फिर आपका वो रेडी हो गया, जब पहले कच्चे कपड़े बनाते हैं, फिर पक्के कपड़े बनाते हैं, whatever, once you have that ready, then it gets into the operation pipeline, right? Like then you do a bottoms up costing, एंड हमने एक्चुअली आई टॉक अबाउट प्राइसिंग ऑल्सो। 2 तरह की प्राइसिंग होती है, एक तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 20 रुपये लगे, मैं 100 रुपये में बेचूंगा, बिकॉज द 80 रुपये इज सपोज टू अब्जॉर्ब माई वेरियस कॉस्ट, आई टॉक अबाउट इट। द अदर इज जैसे हमने स्टार्ट किया, राइट, कि अगर जब आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत कम सपोर्ट होगा इंडस्ट्री में, आप पैसे कम डालना चाहेंगे, 20-25 लाख whatever से आपका सीड फंड होगा, आप चाहेंगे कि तो आप कपड़े कम बना पाएंगे, आपको विथ ऑप्शन ज़्यादा देने कस्टमर्स को, तो आपकी MOQ कहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, किसी फैक्ट्री के पास 20-25 क्योंकि कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से आपका मतलब टू गेट योर क्लोथ्स मेड, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर than what a Zara or a big brand or any other mid-sized brand is also selling. So we took a strategic call in the beginning that it's not a customer's problem, that we are a small business, we don't want to come across as a small business. So in the first year we're going to build a brand, and it's visible on our social media. We've actually managed to build a brand. Financials are obviously getting better, but in the first month hamara COGS was, cost of goods sold was 50% of MRP, क्योंकि customer को I cannot expect the customer to pay the price for my smallness, right? And I think a lot of D2C brands, this is where they're getting stuck, because वो small order के MOQ बना रहे हैं, तो उनका costing इतना हाई है, customers बोलते हैं कि हम कितने पैसे दें, तो कहते हैं I don't agree this as an explanation कि स्मॉल बैचेस में बनाते हैं इसलिए महंगा है। आई मीन हाउ डू बनाओ बड़े बैच में, कस्टमर बोलेगा, सो आई थिंक दैट इज वन बैरियर। वंस यू गेट इनटू द प्राइसिंग, देन you build a supply chain which and operations which you can talk about, like once you get the design. तो just इसमें एक और point था, other people also do is, if they don't want to be making small batches, what they will do is made to order products रख लेंगे। So उसमें basically आपका lead time बढ़ जाएगा, however you plan it. Even the simplest of designs will take 10 days to get out of factory. If you make it with one tailor, one piece, हाँ, तो and customer जिसने खरीदा है, it's most of the time and impulse buy. You want it in 2 days, 1 day, आपके हाथ में हो, आप पहन के देखना चाहते हो, अटा नहीं अटा, वापस किया। So this is also a thing. जितना आप लेट से भेजोगे उतना कम मेरा कमिटमेंट है towards that buy. If you take a month to deliver it, if I'm not really committed, I'll return it most of the time. So that was another thing that I wanted to point out. इसका ध्यान रखना चाहिए, I think. Yeah, I think which is why a lot of small scale businesses, they actually think कि मुझे inventory नहीं build करना, inventory is the biggest killer of and it is true, inventory is the biggest killer, but the thing is कि customers can't be paying the price for operations mismanagement, right? And all of these brands that don't sit on inventory, none of them have scaled, nobody has scaled. Only couture brands like Manish Arora and बहुत ही महंगे हो गए। हाँ, मतलब अगर आप अल्ट्रा प्रीमियम चले जाओगे, मुझे 25-30 हज़ार रुपए देने ही कपड़े, मतलब आई एम क्यूरियस मोर एज अ स्पेक्टेटर
कि बिकने कैसे लग गया, मतलब टॉक लिटिल अबाउट मार्केटिंग आल्सो Yeah. एंड क्या करा, आपका इंस्टा भी बहुत एक्टिव है एंड अक्रॉस देयर इज गुड अमाउंट ऑफ A वर्ड ऑफ lot. माउथ यू हैव बिल्ट, आई डोंट नो Yeah. हाउ इतने कम टाइम में, So see, करा क्या? So yeah, I mean that is one of the things confidence I had because I spent like so many years doing this literally for brands, हाँ. right? Like how to create a buzz in the market, how to create a brand. हाँ, One of the I see. biggest thing that I was on a not a shoestring budget. I don't want to give the wrong picture, but we were bootstrapped, right? I wanted that my launch collection, everybody in the fashion industry who matters and their friends should get up and see what happened here, right? Like what is this new brand? Kharide na kharide, I don't care, but I want them to see. followers, right? Because once you get followers, the brand is authenticated by customers. People place an order, their conversion rates increase, right? So the first thing, like at the stage at which I was in a year earlier, I got supermodels to shoot for me, क्योंकि वो अपने friends को तो बताएंगे whenever supermodel is shooting, she is literally knows the who's who and her followers follow. You know, Okay. And I got a very big photographer to shoot for us. She was a friend of mine. A couple of my friends from the industry helped me get the connects, etc. So my launch shoot was actually with the who's who of the industry. And when I posted that, of course they will promote their own work, and then their friends are really the people I want first, right? Like the cream of the crop fashion. They followed, and if they liked one or two things, so in the first month itself we have 50,000-60,000 followers because we had just really exploded the fashion ecosystem, and then we from there grown. ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप बोल रहे हो. आई एम श्योर द नेटवर्क वुड हैव हेल्प्ड, Yeah, बट हाउ मच नेटवर्क वुड यू हैव इन 10 years of experience? मतलब आई एम जस्ट yeah. trying to understand. 17 years of experience. No, not my network. The network of the people, right? I got it. So for them also to get that much interested कि मैं follow ही करूँगा. No, we also promoted the content. We Okay. also ran strategic ads. It's not that everything was organic, but it is critical to gain that critical mass on social media. So we had like very, very creative ads, celebrity endorsements going out. I mean, people were really endorsing our brand. So that's how word of mouth spread. And important people were doing it. Very important people were doing it, and from the first month itself, even before launch, we had our really great person Alifia, the PR agency. Yes, We I send spoke out to gift boxes to everybody that this brand is going to launch. Again, no brand would actually do this before they. Well, It's an investment, right? It's an investment. So like I think 70-80 who's who were opening Anrush ka packet aaya, they're doing reviews, etc., pre-launch reviews. So there was a lot of pre-buzz we created, an Okay. entire pipeline of stuff. Okay. Yeah. This is very good. And as you rightly mentioned, business will therefore catch up. Yeah. But this is just your first year, right? Yes. That we are into. We'll complete 18th go first 18th year. of May is our First anniversary. Yeah. Wow, congratulations. It's just around the corner. Yeah. How does the next few years look like? Because given the first year was so historic in a way as a start, numerically, business-wise, how does the next few years look like? So the first year, like I said, I told myself हम brand बनाएंगे, business नहीं बनाएंगे. But business ऐसा नहीं कि हमने नहीं बनाया. So we reached an ARR about 4 crores by October itself. That's fantastic. Then we said कि हमें अब stop करना है क्योंकि हमारे operation सारी फटी हुई है and COGS high है, delivery times high हैं, all of those things. So let's get our business metrics in Processes place, right, yeah. which actually takes longer because remember I started it on my own. Then Piyush came to fix the mess. Yes. So it wasn't really a big mess, small things. So basically, आपने इतने बड़े mess संभाले हैं ये. अरे so because it's a small size scale of the business, so the number of customers you need to pacify or have accountability to is lower. Like think of a Zomato where every day 18 lakh orders are coming in daily. उसमें 5% 2% का डिले मतलब कि बहुत लोग हैं, राइट? हमारे में 2% का डिले मतलब एक ऑर्डर कोई इधर उधर हो गया है भाई, फोन करके संभाल सकते हो, राइट? सो बेसिकली दैट द स्केल इन इटसेल्फ इज द काइंड ऑफ पाइल डिसाइडर की कितना बड़ा मैस है, नहीं है. दूसरा टू फिक्स की अच्छा हमें अपने कॉग्स ठीक कर रहे हैं, हम अपना सप्लाई चेन फिक्स करना है, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी डन द ग्राउंड वर्क एंड टाइड अप विद लाइक अ शिप डिलाइट,
warehousing के लिए, logistics के लिए, सारा Nice. legal and everything is already taken care of. You don't have to get into people. Signing a contract is the single most time taking process in any business deal. 100% agree. 30 days at least, like दोनों साइड की लीगल टीम्स आपस में खेलेंगी, 4 पॉइंट्स इनके होंगे, 2 पॉइंट्स इनके होंगे, बीच में मांडवली करके वो क्लोज करना 1 महीने का काम है. एवरीथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड. तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपने बोलना है कि अच्छा मेरा स्केल अभी ये है, दिस इज वेयर आई वांट टू बी फॉर द नेक्स्ट 5 months एंड आई वांट टू फोकस ऑन फिक्सिंग दीज 5 metrics. नाउ व्हेन यू पुट ऑल योर एनर्जीज बिहाइंड फिक्सिंग दैट, सो you know the kind of investment or the MOQ now that you need to be, so that your cogs lower up. Any plans to get into lesser cities in the future with the products that you currently have? Lesser cities? Beyond metros and let's say the tier 2, 3, No, 4 we cities. want to have soon enough. Next year onwards, we want to have store Stores. presence. Physical presence. Physical, because the ASP that the price point that we operate in, actually we will have to give touch and feel. I think we're leaving a lot of money on the table because it's high priced and people are not able to experience it. So of course we'll start with metros, but they're unsuspecting, key markets like in Ahmedabad and Chandigarh, which we might do sooner than other metros, because metros customers are spoiled for choice. ये unrush word का मतलब क्या है? Rush का उल्टा unrush. And how does it resonate with the brand? So our tagline, our philosophy is, or our communication hook is that there may be 100 pieces in your wardrobe, but we design ours so that you can wear these 100 times over, which basically means that fast fashion का opposite, कम पहनो, कम खरीदो, ज़्यादा पहनो, last long. And for it to last long, you have to have 2 things fall in right in place. One is the aesthetic has to be trend agnostic, season agnostic, right? We do very beautiful classics, very, very elevated stuff, which is quirky. It'll make head turns, but it can't be pinned down to a specific season. And our fabric quality is insane, right? Like that's why you can wear it 100 times over, means you can machine wash it 100 times over, guarantee it will be fine. Most of our suppliers actually say कि इतना महंगा फैब्रिक हमें किसी और ब्रांड का नहीं आता है. That's a clear USP. सुन के भी ये So obviously high quality fabric will be costlier than the everyday run of the mill, but yeah, that's a feedback we take positively. Because our customers also, what are we competing with? We are competing with women brands that women are buying when they're traveling internationally. That's the segment we cater to. Okay. कि my behavior also before I launched, like कि मैं जाती थी छुट्टी में, whatever international holiday, 1 day is for shopping, say Tata to husband, and I have taken a budget and I will. Those are the brands I'm competing with, right? So women already have those things in their wardrobe. I have to Match give them. that. Yeah, so that is the only way I can be a better brand from India to the world, right? सबसे अच्छा फीडबैक क्या मिला है आप दोनों को, either in Unrush or before that in your corporate careers, which you have carried with yourself that this was very useful? कॉर्पोरेट से तो मुझे काफ़ी अजीब फीडबैक मिले कि मैं अच्छी मैनेजर हूँ. मैं अच्छी मैनेजर हूँ. हाँ, मैं अच्छी मैनेजर हूँ. मेरी टीम में अट्रिशन रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट 2 साल तक तो 0 ही था. इन एन एनवायरनमेंट वेयर जनरल अट्रिशन रेट वाज 40%. But you don't believe you're a good manager? I believe, but अभी टीम नहीं है ना मैनेज करने के लिए, तो हैंडी नहीं है वो. I think I'm a hustler. Okay. And I think I'm one of those people that, even though I'm from a creative background, I understand and I'm not scared of numbers. I think and I engage with a lot of creative people, and as I want to leave there, that निफ्ट के बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जिनको फैशन ब्रांड स्टार्ट करना होता है, और somehow when I meet them 5-7 years into their careers, बजट का डिस्कशन हो रहा है, वो कॉल पे नहीं आएंगे. they will start believing they are bad at numbers. And I always tell them कि तुम निफ्ट में घुसने से पहले तो अच्छे थे ना, एवरेज होते होगे नंबर पे, बहुत रॉकस्टार नहीं थे, तो तुम व्हाट हैज निफ्ट डन टू यू इन 4 years कि तुम अपने आप को बिलो एवरेज समझने लगे, राइट? बिकॉज आई थिंक दैट क्रिएटिव पीपल understand numbers. They are made to believe that they are scared, and then this narrative becomes. And I think the biggest advantage I get to the business is I understand numbers. He may be better, but I understand it very well. I take 2 seconds more, 5 seconds more, but I will get there. And my approach to a problem is very, very creative. Ki,
इस तरह से देख लेते हैं इस नंबर को, इसका हैकी वे तरीका, क्योंकि इसको तो सारे फॉर्मूलाज पता है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आंसर कैसे लाना है, तो द शॉर्टकट आंसर्स आई एम एबल टू गिव. सो आई थिंक पीपल हैव टू, creative business owners should not be scared of numbers. You have to have it, get it wrong, but just do it. Don't say I can't do it. Okay. Feedback, best feedback you've received? I've not really received a lot of इतने सारे कंपनीज में भी फीडबैक नहीं आया. good feedback. So I think people who reported to me were really happy with me. Okay. But yeah, so basically just putting yourself in their shoes and thinking about, a lot of managers have this tendency to go and say, ये काम 2 दिन में हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हुआ है? Put yourself in their shoes, look at their system and see what they're doing. One of two things will happen. Either you'll see that the person is doing something in a workaround way which is taking him longer, or you'll see that he has not gotten to it yet. If it's not, then either ways there is a way to resolve it rather than just lambasting them about the whole thing. So, Got it. See, I remember the best feedback I've actually got is my ex-super boss, and it's common, it's not like it was his invention, but it really struck a chord. He said, Harish Narayanan, he used to be the CMO of Myntra. He said, it doesn't matter what you do, it matters more how you do it, which encompasses your conduct, your team management skills, your creativity, your ability to be frugal, everything. So the how, you may do a little bit less, but do it elegantly. Amazing. That brings me to the last part of our podcast, where we will be taking you through individual rapid fires. And we have a small audience which will Cheer for us. who will judge you cruelly and give, a larger audience online. yeah, and give a final winner. Yeah. But this one is rapid fire, straight from the heart. You can decide who wants to go first. You guys can come a little forward so that you are able to judge even more neutrally. Okay, who wants to go first? Okay, fine, I'll go first. You sure? Yeah. Okay, please dim the Jaguar lights. Okay. Okay, we'll go ahead. Piyush, this is your rapid fire for Barta India Dekho. Your first question is, what is the first feeling that you got when you decided Unrush? Relief. What is your slow fashion guilty pleasure? Blue jeans. Blue jeans, my god. Unrush as a street food, what would you call it? Chowmin. Okay, a fashion. That's what I think about You will street have to food. explain this later. Yeah. A fashion rule that you happily ignore every time. You have to match your belt and shoes. कौन बनाया है ये rule? Okay, no comments. Do you like a quiet corner or a buzzing workshop when you're working? Either is fine. When I'm working, I can focus. Fair. Unrush or wife? Wife. A color that feels like sukoon. White. Okay, one go-to stress buster for you. Snooker and pool. Oh, snooker and pool here. Great. Tea, coffee, or a long, slow walk? Not a walk. Anything else. Okay, a holiday or work? Either is fine. Right now, either is fine. Like before starting up, I would obviously have said holiday all the time. Okay, what would be your most favorite person in your life? My mom. Okay, one thing that is an unnecessary thing in your life right now. Unnecessary. पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ चाहिए भाई जो है सब चाहिए. हाँ. Okay, one thing that you can give all your money for. I don't know. Nothing. Last question. One thing that is your last death wish. I haven't thought about that. So, like, I don't even have like a big dream also to actually convey. Okay, fair. You did reasonably. Okay, let the audience decide at the end how you did. Oh Are my you God, ready? I am nervous. This- I had the same I question. set the bar Of course so not. low. What kind of a question is that? Oh, because his questions I couldn't answer. You did well. Oh, I thought I set the bar really low so that you can excel. By design. Yeah. Sure. Are you ready? Yeah. Okay, time of the day you feel most creative. Afternoon. Okay, your spirit animal, one animal that you relate the most.
My friends say a cow. A cow? Oh, okay, do we take a pause now? You want to deep dive into this one? Okay, fair. Whatever. One thing that made you laugh loud while building Unrush. Every time I mess up Piyush's sheets and then he has to redo them. Oh god, You very frustrating. Oh, it's Okay, okay. Do you like your wardrobe more or Unrush's collection more? Unrush's collection. Okay. A song that captures the Unrush vibe. I don't listen to music, so just so that I win it, I'll say happy birthday to you. Our birthday's coming. For Your birthday together? No, No, Unrush Unrush's ka birthday is birthday. so Okay, fair. this is I get a point for this. Fair. A book that captures the Unrush vibe. A book that captures the Unrush vibe. Quick. I don't know. There is no book that captures the Unrush vibe, and I am a avid reader. Okay. Fair. Like Which is this not a bad year, thing. this year I have read like I've counted 56 books already. This year, 56 books. I read like it's chiclet. Like, My God, that's a fantastic. yeah, so that's why and I say I don't think it matches. It's not for the lack of options. Fair. Husband or Unrush? Oh, cutie, my husband. That cutie was for him. Okay. Hardest Unrush piece to be perfect. Hardest Piece of Unrush that you are struggling to make perfect. Pants. Okay. Favorite compliment you have received till today? Our fits are just fantastic. Personal compliment? My personal compliment. Praise compliment. I am absolutely non-judgmental. Okay. If you have to see Unrush as a perfume or a scent, what would be the... Lancome's Magnifique. Okay. Fine. What makes your heart feel fully charged at the end of the day? If I have been able to work out and read. Okay. Favorite food item? Pani Puri. Okay. Favorite city in the world? Cape Town. Okay. Person you would always want to avoid but exists in your life? Person I would always want to avoid but exists in my life. It's a rude thing to say. Yeah. You have the option of not saying You it. want to skip this? I don't like my cook currently. She's really not getting the brief. I love my cook these days. But okay, what would you want to be born in your next birth, if at all it exists? I want to be born as me. As you? Yes. How would you remember that you were you? अरे ये तो जो रिवर्ट करेगा उसका काम है यार. उसको. That's your I last would feel the question. power. I do feel that, you know, a very close friend of mine recently told me that, oh Pragya, in your mind you think you're a star, and I don't think she said it very well, positively, but I do feel like I have always believed that I am a star. Even if I become a star or not, but I believe I'm my star. Fantastic rapid fire. Can we have a quick round of voting for both of them? Yeah, we can have a round of applause for the good performance. We will go with how many votes for Piyush first? You can only raise your hand once. That's fine. Fantastic. I have to ask another question. Congratulations on this very, very, very small, insignificant win. But No, it's significant. well done. I'm trying to pacify you, brother. I am not going to. He's going to hear about this every day. But you also have to ask him why chow mein. Oh my God! Why chow mein? I like later. chow mein. We'll keep Like that. I can if I have And to your have chow mein one is food- dirty street chow mein. Yeah, obviously. Like I don't want authentic Chinese की कोई taste नहीं आ रहा है. Street food side में बनाओ जल्दी करो. Has that tadka that Yeah. you can't explain. With right? dhania. No, with You don't कच्चा like प्याज that. on top. With chow mein with dhania. They put it on the Yeah, I streets. know, I know. Thank you. Fantastic conversation. I didn't realize how the time was Thank you. spent. Loved the conversation. Hope you had a great time. Yes, thank Our you. audience would take a lot back. Thanks for coming to Birthday India, Dekho, Yes. both of you. Look Thank you so forward. much for having us. It was fantastic. I hope you can edit a good episode out of this. Yeah. Look forward. Thank you. Thank you. Very interesting episode, right? In this world of so much fast fashion and e-commerce, ये एक brand है
जो स्लो सस्टेनेबल फैशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा 1 साल के अंदर ये ब्रांड प्रॉफिटेबल भी हो गया है। एंड उसके ऊपर जस्ट हैविंग वुमेन एम्प्लॉइज ट्राइंग टू बिल्ड दैट पर्पस एंड पैशन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। And beyond that, what was most interesting to me is the compatibility between two founders. दो बहुत अलग तरीके के लोग who have the same values, building something for Bharat that will actually take India forward. And therefore the name, Badhta India Dekho. Don't forget to subscribe with us and look forward to see you again for our next episode.